While the odds are stacked against the Congress, the party isn't giving up without a fight. And to show just that, the party is taking this busload of journalists to show off its campaign. At 30 grand per round trip, the party has hired this bus and is ferrying journalists to cover Rahul Gandhi's first campaign rally in Haryana. महंगाई कम कर देंगे। महंगाई कम हुई? काला धन वापस आ जाएगा 100 दिन में। 100 दिन में मैं काला धन वापस ले आऊंगा, मोदी जी ने कहा। काला धन दिखाई दिया आपको? साक्षरता के मामले में हरियाणा देश में 22वें नंबर पे खड़ा है। विकास दर के मामले में हरियाणा देश में 20 नंबर पे खड़ा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा 8वें नंबर पे खड़ा है। लोगों को गुमराह करने वाली बात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करी, इस केवल कह के हरियाणा की उपलब्धियों को नकार के काम नहीं चलेगा। Till now, the Hoodas have remained the face of the Congress campaign in Haryana. कल तो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, महंगाई खत्म करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, हर चीज सस्ती करेंगे, किसान को स्वामीनाथ जैसा भाव देंगे, या जो मेरी कमेटी है उसे रिकमेंड कर रखा वो भाव देंगे। लेकिन अच्छे दिन सरकार आने के बाद क्या कहने लगे? कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी। पिलाओ भाई कड़वी घूंट। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बात, जैसे आपने कहा बेरोजगारी भत्ता इतना देंगे, बुढ़ापा पेंशन उन्होंने बोला है कि हम 1,500-2 हज़ार देंगे। 8 मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश में, 8 में से 1 मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश में, 750 भी, हमारी 1500 हरियाणा में पेंशन है, वो आधा भी नहीं देते। और यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम ये कर देंगे, और कर देंगे तो मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने किसी प्रदेश में लागू करके दिखाएं। Some believe that this has been done to deflect the blame from the Gandhis for an imminent loss. Many in the party vouch that, but have still not shied away from feeling Rahul Gandhi, who till now has been an utter failure at winning elections for the party. Hooda ji has been our principal campaigner. He's led the state very ably for 10 years. So obviously, he will be our most prominent face. And it's not a matter of central leadership. This is not a Lok Sabha election or a national election. Ultimately, it is the work done by the local leaders and by the local government, obviously, with guidance and policy directives from the main Congress party, which dictates our ideology. But it is ultimately a test of the capability of local leaders. But after a bitter reality check in the Lok Sabha polls, the Congress president herself entering battleground Haryana and raising the poll pitch on the same day as BJP star campaigner Prime Minister Narendra Modi. From one stage to the other, they traded charges. ऐसा माहौल बना दिया गया था जैसे देश में आजादी के बाद से तो कुछ हुआ ही नहीं, और अब ये रातों रात सबकी किस्मत बदल देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? जो चुनावी वादे किए थे उसे पूरे करने के लिए क्या कोई कदम उठाए हैं? कांग्रेस ने कभी 60 साल के अपने काम का हिसाब दिया है क्या? आप मुझे जवाब देंगे? क्या कांग्रेस ने 60 साल में अपने काम का कोई हिसाब दिया है क्या? कोई हिसाब दिया है क्या? और मेरे से 60 दिन का हिसाब मांग रहे हो? अरे शर्म करो, शर्म करो। पहले जरा 60 साल के अपने पापों का हिसाब तो दो जनता को। Jats comprise around 28% of the state's population. And like its neighboring states, caste plays a big role when people consider who deserves their vote. While the Congress and the INLD lay claim to most of the Jat vote, the space for non-Jats is being explored by parties like Kuldeep Bishnoi's Haryana Janhit Congress.
So it was my biggest mistake to be part with the BJP, and they used and they betrayed me and the people of the state of Haryana. And I was really impressed with Mr. Modi when he said that he will be doing a lot for the country. He false promises he made. He promised moon and stars to the people of the country, and now you see where the country is going. There is no difference between the UPA government and the NDA government. All the promises made by Mr. Modi, they've fallen flat. So I personally feel it was a big mistake on my side to help them in winning 7 seats in Haryana. But the BJP says that the coalition would have stayed if Kuldeep had agreed to their terms, and you were quite adamant about your own dream of becoming the chief minister of the state rather than preferring the coalition and a good government. There are two questions which you asked in one question. One is that Kuldeep was if he wanted to be, if I was greedy of any post, I would have become deputy chief minister 5 years ago. I would have become minister in central government in 2006. I did not. I am not here. I am not aspiring for a chief ministership. I want to do a lot for Haryana, and I can only deliver if I get the chief minister post. Number one. Number two, I was not adamant or egoistic on anything. There was nothing to bargain. Nothing was offered to me. It was just their ego, their arrogance, which was showing. Nobody was. I met Mr. Amit Shah. I clearly told him the possibilities. What do the people of Haryana want? And their mind was very clear. They wanted me to break away with them. They did not want to go with them because of their inflated ego. So what is the impression of the BJP that you are carrying after this breaking away of the alliance? People will show the results to them in time to come. Today, if BJP had, if you can see, if BJP was in power, was very confident. Modi doing 10 rallies in Haryana, Amit Shah doing 27 rallies in Haryana. All the top leaders are here. Where is the wave of Mr. Modi? The leaders are running pillar to post to get 1-1 votes. Where is the wave of Mr. Modi? He allied with the BJP before Lok Sabha election but is now going alone in the hope of playing kingmaker. He himself is a chief ministerial hopeful, but Kuldeep Bishnoi's influence is largely restricted to Hisar district alone. Others who are going for the same non-Jat pie include leaders such as tainted former Home Minister Gopal Kanda and Vinod Sharma. They have launched their own separate political parties. The biggest problem with you, Mr. Kanda, is the image that you have earned when you were the Home Minister. I mean, the case against you of abetting the suicide of Gitika Sharma. Don't you think that is the biggest impediment for you, and people will not trust you for that? देखो ऐसा है, पूरे हरियाणा को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को पता है, और पता आपको भी है कि गोपाल कांडा पर ये किस तरह का केस था, और ये इस तरह के केस कैसे कैसे लोगों पर कितने हैं, कोई अरेस्ट भी नहीं होता. ये फर्स्ट टाइम देश में ऐसा हुआ कि एक मंत्री बिना इंक्वायरी के अंदर हुआ, जबकि दिल्ली में कांग्रेस थी, ऊपर कांग्रेस थी, और इन सब की सोची समझी एक साजिश थी, एक चाल थी. किसकी साजिश थी? देखो ऐसा है, ये जिसने किया, जिन सरकारों ने मुझ पे किया, ये उनकी चाल थी. वरना मेरी 4 महीने से किसी से मुलाकात भी नहीं. 6 महीने कोई एम्प्लॉय, 6 साल तक मेरे पास काम कर रहा है एम्प्लॉय, जब उसने कोई शिकायत नहीं. जब से गए हैं 4 महीने से मेरी हेलो भी नहीं. तो मतलब बिना बात का एक बतंगड़ बना के बीच बीच में तो इस कांडा के ऊपर मर्डर का केस, कांडा के ऊपर यौन शोषण का केस, ऐसी कोई एफआईआर भी नहीं है. 306 के अलावा कोई एफआईआर नहीं है मेरे ऊपर दर्ज. ये आप जाके देख सकते हैं कहीं भी. पर क्या है, मीडिया को गुमराह करके जिस तरह का बवंडर बना हरियाणा में, वो चाहते थे ये आगे ना आए. कौन चाहते थे? You were in the government, you were part of the government, and Congress government was running on your support. Why would they do something like this? हमने सपोर्ट की, यस आई नो, पूरा हरियाणा जानता है कि हमने सपोर्ट की कांग्रेस की. ये उनका चेहरा, ये उनका नकाब उठ गया पूरे हरियाणा के सामने. और आपने देख लिया इलेक्शन में क्या हुआ, एमपी इलेक्शन में, लोकसभा के, और अब विधानसभा देख लेंगे. मैं कभी भी जाट, नॉन जाट, गैर जाट, मैंने हमेशा कहा कि मैं कभी भी 36 बिरादरी की राजनीति नहीं करता. मैं सिर्फ और सिर्फ एक बिरादरी, उसको कहते हैं इंसानियत. और ये पूरा हरियाणा जानता है कि गोपाल कांडा सिर्फ इंसानियत की राजनीति करता है. Surveys have given an edge to Chautala's INLD. And many believe that the BJP and the Congress are locked in battle for the second spot. For all the players, the stakes are very high. It's a trial by fire for the Modi-Shah combined to make the BJP's first serious inroads into Haryana. For Chautala, it could be his personal last bid in the state. For Hooda, a do or die
to ensure his political survival in the Congress. A face saver could earn him a comfortable senator in the party headquarters, while an embarrassing defeat would ensure a sure shot oblivion.